Lucknow, along with Mr. Vikas Kanaji, who is a prominent officer who retired as Range Officer of Kukrail Reserve Forest. Please sit down, please take your seats. Today we are also joined by our respected Professor, Dr. Anukriti. Please put your hands together along with Secretary Sir. Before we kickstart the formal proceedings for the day, let's just reflect a little bit on what is the true purpose of education. True education aspires to convert generations and generations of mere Homo sapiens into effective human beings who have this ability to see life for what it is, observe the happenings of life around ourselves for what they are, and then to also be able to think about the learnings of life and to reflect on them. My dear students, true education absolutely aspires to convert generations of mere human Homo sapiens into human beings who are objective, rational, and who are endowed with the capacity of logical reasoning. And that is exactly what we stand for here at IMRT Business School. With thunderous applause, let's kickstart the proceedings for the day. We would like to welcome our chief guest, sir. Ladies and gentlemen, I would like to introduce our chief guest for our special morning, Mr. Sameer Verma ji, who is now based in Lucknow but is the general manager of Lulu Shopping Mall, as we all know about. Lulu Shopping Mall is a very prominent shopping mall in Lucknow. Everyone is aware of the brand that Lulu itself is. He carries a lot of vast experience from his previous roles at Lulu International Shopping Mall Private Limited and Holland America Lines. Mr. Sameer Verma also holds a prestigious degree in hotel management from the Institution of Hotel Management, Catering and Tourism. Although he was raised in Mumbai, he did choose Lucknow as his home eventually along with his family. And in 2012, when Lulu Group decided to establish one of its biggest malls in India, he was the one who was trailblazing and spearheading the whole movement. And in 2018, when the brand decided to expand into our very own city, at that time, Lucknow witnessed the coming up of Lulu Shopping Mall under the guidance and the broad vision and leadership of Mr. Sameer Verma. Please put your hands together for Mr. Sameer Verma. We would like to welcome you, sir. We would like to also felicitate you. And to do the honors, I would like to request our secretary, sir, Shri Sanjeev Bansalji, to do the honors for Mr. Sameer Verma. Ladies and gentlemen, thunderous applause. Schedule, but for you to take out the time and to inspire our students means a lot to us. We would also like to felicitate and honor Mr. Vikas Kanaji, who has joined us today. To do the honors, I would like to request our director, sir, to do the honors, Dr. Tarun Singh Gangwarji, along with Mr. Vikas Kanaji. Sir, we welcome you as well. Thank you so much, sirs, for joining us this morning. And before we finally kickstart the formal proceedings, as IMRT Business School has always believed in the concept of holistic development, where we do not just focus on academic excellence, but we also focus on the overall physical, mental, social, and spiritual development of our students. Over the last few years, we have been conducting a lot of holistic development activities which focus on all these aspects of development for our students. Here we have a PowerPoint presentation which depicts some of the activities which have been conducted specifically in the last 3 months. Let's take a look. Alright students, BCom Honors first semester, we are back in the auditorium with our second presentation on Principles of Management Thought. Huge round of applause for our Group 2. Group 2, which is going to give a presentation on Mr. Henri Fayol's 14 Principles of Management. Am I right, Group 2? Yes, ma'am. All of you are set for the presentation? Yes, ma'am. Ready to rock and roll on the stage with your mics? Yes, ma'am.
And I believe that their motto is "We all are leaders." Am I right? Yes, ma'am. तो सागर जी क्या बोलना चाहेंगे अपने ग्रुप के बारे में? Good afternoon, respected ma'am, and good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you. अरे रुकिए, सागर जी एक बात हमको याद है, आप ही थे शायद क्लास में जब आपको बहुत ही ठंडा सा गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग मिला था, आपने कुछ बोला था, आज वो रिपीट करिए. Good afternoon, respected ma'am. Good afternoon. Good afternoon to all of you. ये लोग तो डर गए, इनको याद आ गई आपकी बात, इसलिए शायद रिस्पॉन्ड कर दिए. Of course we expect a nice reciprocation which inspires encouragement in our team members. So when you were participating, they were there encouraging you. Now the tables have turned. अब बारी आपकी है, आप वहाँ पे हैं और जो ऑडियंस थे आज हमारे वक्ता हैं और आप श्रोता हैं. तो while they give their presentation with a lot of energy and enthusiasm, it is now your duty and responsibility as the audience to boost their morale and keep them encouraged throughout the presentation. So, thunderous applause for our Group 2 team leaders. Thank you. They are not members of a team, all of them are authentic leaders of this team. सब एक दूसरे को लीड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, and we wish you all the best and we hope to have a grand presentation today. Over to you. So, hello friends, my name is Sharma and I am the leader of Group 2 and my group name is We All Are Leaders. I repeat my words, my group name is We All Are Leaders. First of all, I would like to thank Anukriti ma'am for giving us this wonderful task because this presentation not only boosts our confidence but it also builds our personality. It helps us how to speak in front of people. It helps us how to communicate with others. It helps us how to present ourselves in front of them. So really thank you ma'am. माशाल्लाह, जोरदार तालियां हो जाएंगी. आपकी तो हम समझ सकते हैं कि आगे जाते जाते और कितना ज़्यादा धमाका होने वाला है. Thank you so much for the appreciation. I requested to all my team members to please show your smiling face to our wonderful spectators. You all come here to support you. So please give a round of applause to audience. ये आपका अंदाज़े बयां बहुत ही अच्छा लगा. देखिए बिल्कुल एक तो प्रेजेंटेशन देने आए हैं, ऊपर से आप ही का मोराल बूस्ट कर रहे हैं. Heights of generosity. वाह, मजा आ गया. Very nice. Generous team leaders. So here we are going to explain the 14 principles of Sir Henri Fayol. My team members will come one by one and explain each and every principle of Henri Fayol. I guarantee you, you're going to learn something, and I definitely that you gain knowledge regarding these principles. So here we go. Before starting the principles of Henri Fayol, I would like to call Ansika to please come here and explain about Henri Fayol and his contribution. Thank you. Thank you so much, Sagar. Now, I would like to continue with by telling about Professor Henri Fayol and his administrative theory. Professor Henri Fayol, to manage is to forecast and plan, to organize, to command, to control and to coordinate. With this, I would like to give a further briefly explain about Sir Professor Henri Fayol. Henri Fayol was a French coal mine engineer born in a suburb of Istanbul, Turkey in 1841. His management theory, his business administration and his business principles are still renowned and hold a very prospective place still there. He was born in the suburb of Istanbul in 1841. His father was an engineer and he was appointed for the supervision
of the Golden Hour Galata Bridge at Galata Hour, and he constructed there as it is still very renowned. Further, in 1878, he was called for his iron ore theory, and that theory is still renowned and gave a lot of reputation, and he became a very renowned name after that. Now I would like to further continue it by giving some of the contributions by Sir Henri Fayol. The management principles that are still very known to us, all the 14 principles that my team members will continue further, are given by Sir Henri Fayol. All the functions that are planning, organizing, directing and controlling are given by Sir Henri Fayol. Thank you. Now I would like to call Utsav for the further continuation, and he will be telling about all the 14 principles of Sir Henri Fayol. Oh, Mr. Utsav, we welcome you. 14 principles of management given by Dr. Henri Fayol are division of work, autonomy and responsibility, discipline, unity of command, unity of action, subordination of individual, interest to gender interest, remuneration of employees, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, standard of personal, initiative, spirit, growth. I would like to call Aditi Bhatta to explain first principle. Miss Aditi Bhatta. The ever soft-spoken Miss Aditi Batra, who's going to showcase her skills of boldness, command, and confidence today as a change. Thank you, Utsav, for calling me. Thank you, Utsav, for calling me. Now I am going to. Miss Aditi, before you continue, please keep your mouthpiece close to your mouth because you might become slightly less audible for our cameraman. So, as much as you focus on the audience and your content, I would request you to also keep an eye on the mouthpiece. So now today I am going to explain about principle of management as given by Henri Fayol. So today I am going to explain about principle of management as given by Henri Fayol. But we should first understand what is principle of management. Can anyone in the audience please tell me what is it? Audience, Mr. Trish, क्या बोलना चाहेंगे? Trish के साथ ही शुरुआत कीजिए. Thank you for the question. In the principles, we can say the principles are the basic rules for the institutions, for where and how and when we have to perform with the other peoples and other subordinates and superior, where how to work with them. Absolutely right. Very well spoken. So we should first understand the very first principle of management as given by Henri Fayol, and it is division of work. What is division of work? Division of work is assigning different duty to different employee and assigning it the whole task into a compact job and assigning it to different individuals. It will help the organizations to save them from any type of chaos or misunderstanding and also help them to avoid from any kind of wastage of time. An individual that do a work for long period of time gain an accuracy than as compared to a person who is untrained or uneducated. In the lines of Henri Fayol, we have often heard that workers assigned to same work, the manager always assigned to same post, require an accuracy in their work which will increase their output eventually. Let us understand it with an example. The task of making a bridal gown or lehenga was assigned to a boutique which was further divided into several sub-tasks to their employees. The task was assigned in such a way as it can be done by every individual based on their skills. The weaver weaves the textile, the tailor sews the dress, and the
design maker makes the design. As each and every task is assigned to different individual, the task is done without any kind of chaos or misunderstanding and was perfect. हम एक एग्जाम्पल और इसमें दर्शा सकते हैं, जैसे एक मारुति कार एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बहुत मशहूर है, वर्ल्ड फेमस कंपनी है। अगर उसका ओनर ये सोचे कि मुझे एक नया कार लॉन्च करना है मार्केट में और वो ये समझे कि मैं सारा काम खुद कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। उसको अपने काम को, ये पूरा टास्क को अपने एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करना होगा। जैसे कि कार का मैन्युफैक्चर पहले डिज़ाइन करेगा, डिज़ाइन मेकर बनाएगा, फिर वो मैन्युफैक्चर होगा, फिर वो सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगा, काम मार्केटिंग होगी, तब जाके कुछ प्रॉफिट कमाया जाएगा। अगर ये काम अच्छे से डिवाइड होगा तो किसी परेशानी के कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगी और काम अच्छे से हो सकेगा। अब मैं अगले कार्तिकेय को बुलाना चाहूँगी आगे का बताने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक बार मिस बत्रा के लिए जोरदार तालियां होंगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगी इससे पहले कि कार्तिकेय जी आगे बढ़े, I would also like to throw some light on Miss Batra's work. A strong command of both English and Hindi, and to be able to juggle both the languages with so much of ease and effortlessness is not an easy task. Not everyone can do it. When I take communication skills classes, I often quote Mr. Amitabh Bachchan's example. If you ever listen to Mr. Amitabh Bachchan's interviews, he is equally adept at English as well as Hindi. उनको हिंदी में भी वार्तालाप करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत सक्षम है, and he can equally speak well in English with expertise, command and effortlessness. So very well spoken in both the languages. Good job. Moving on to our next speaker. Oh, we have a question. We have a question. किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, मतलब किसको और कैसे डिवाइड करते हैं? जिस प्रकार से इंसान की स्किल्स होंगी वो उस काम में माहिर है। ये बॉस रिक्रूटमेंट के समय पे ये ध्यान रखता है कि कौन किस काबिल है, उस हिसाब से उसको पोस्ट डिटरमाइन करी जाती है, उस हिसाब से उसको पोस्ट दी जाती है, तो उस हिसाब से वर्क डिवाइड होता है ओनर के द्वारा। Are you okay with the answer? Thank you. Good morning everyone. Good morning ma'am. Thank you Riddhi for introducing me. Now let's begin with the second principle of Henri Fayol, authority and responsibility. According to Henri Fayol, authority and responsibility should have an equal balance between them. Authority means power to take decision and responsibility means obligation to complete the task on time. If excess of authority without matching responsibility may bring negative results in the task, and excess of responsibility may bring without matching authority will not allow the worker to complete the task on time. Very well spoken. Yeah. There is need to bring parity between both of them. Some positive effects of authority and responsibility: it prevents misuse of authority, it helps in fixing responsibility, it increases the confidence of employer. Consequences of violation: if responsibility exceeds authority, then subordinate cannot perform his duties. Authority exceeds responsibility, then subordinate may misuse it. For example, if a foreman is given responsibility to produce 50 units per day, then he must have a exercise authority to draw raw material from the store. If he is not given that authority, he will not be able to complete his task on time. So that's all from my side. Now I would like to invite Mr. Sharma, my teammate, to take over the mic and forward the presentation in full swing. Mr. Karthike also deserves a round of applause. Over the last 3 months, Mr. Karthike, your communication skills, Mr. Karthike, your communication skills over the last 3 months have improved drastically. They have shot up exponentially. So today you have surprised me with your skills. I think you have been practicing a lot on a daily basis. Good job, Sharma. Thank you, Karthikeyan, for calling me. And I am going to tell about discipline. Discipline! Talia! Gyanendra, right? Mr. Gyanendra is going to touch upon my favorite topic, discipline.
we start. What is discipline? Discipline means sincerity, obedience, or respect of authority and observance of rules and regulation in an enterprise. इसका एक फेमस कोट भी है, जैसे कि on the way of goals on the way of achievement can't be achieved by the without discipline and sincerity. So let us take example. इसके दो इफेक्ट है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? ये ओवरऑल हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रन करने में, और बॉन्ड मजबूत करने में भी ये हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयमेंट और मैनेजमेंट के बीच, और इससे ओवरऑल रेपुटेशन भी बढ़ता है। और इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। नेगेटिव इफेक्ट मतलब अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगा, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो बॉन्ड भी मजबूत नहीं होंगे, और ओवरऑल उसका गुडविल भी डाउन होगा। और that's all from my side, and now I am inviting Satyam for continue this. ऑडियंस में एक सवाल खड़ा हुआ है, तो आइए ज्ञानेंद्र जी। आपने नेगेटिव तो बोला है, डिसिप्लिन के नेगेटिव इफेक्ट्स होता है, तो क्या हम बोल सकते हैं डिसिप्लिन नहीं मेरी सेल्स गिर जाएगी? डिसिप्लिन नहीं ऐसा तो है नहीं। एक माइक दे दिया जाए। जी, डिसिप्लिन नहीं है तो सेल्स गिर भी सकती है। मान लीजिए कोई सेल्समैन आया आपसे कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, आप उसमें अच्छे से पेश नहीं आ रहे, आप डिसिप्लिन नहीं दिखा रहे, आप उसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि नहीं ये है, ये कैसे है, मतलब आप एटीट्यूड दिखाएंगे तो पहले तो आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। आप अगर डिसिप्लिन दिखाएंगे तो एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो हम तो नहीं मानते विदाउट डिसिप्लिन एक सेल्स दिख सकता है। एटीट्यूड आपने बोला, तो डिसिप्लिन में एटीट्यूड नहीं आता, देयर इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ नेगेटिव एटीट्यूड। वेरी नाइसली सेड। एटीट्यूड का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, बट डिसिप्लिन है ही पॉजिटिव एटीट्यूड, इसे आप नेगेटिव ले नहीं सकते। ज्ञानेंद्र जी के इस जवाब पर सीटियां बजनी चाहिए, One answer. Attitudes can be of thousands of types. Yes, negative, positive, ugly, whatever. But discipline से ज़्यादा positive attitude क्या होगा? Very well spoken है. This is like this is the सीटी बजाओ moment. Very well spoken. Krishti, on behalf of Sagar, आपसे पूछना चाहूँगी, आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं? यस मैम। Very well. Thank you, Mr. Gyane, to introduce me. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. I am here to represent my team. We all are leaders. My topic is unity of command. According to this principle, every employee should receive order and command from only one superior. If any employee get command from two or more superior, then he will confuse whose command he follow firstly. The unity of command maintained by the organization, it has to avoid confusion and create better relationship between employees and manager. जैसे कि इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है और कंजुगेशन ऑफ वायलेशन क्या है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये एम्फेसिस करता है कॉमन गोल को अचीव करने में और हेल्प करता है उसको अचीव करने में, और इंश्योर करता है एक्शन और फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो ये किसी भी काम को डुप्लीकेशन करने में बहुत ज़्यादा करता है, डुप्लीकेट करता है किसी काम को। तो मतलब जैसे कि हम कोई काम को मतलब जैसे कि अनुकृति मैम ने हमको कोई ऑर्डर दिया, वही काम डॉली मैम ने कुछ अदर वे में कर दिया, तो हम कंफ्यूज हैं कि किसका काम पहले करें, और दोनों काम हम सोचेंगे कि कर ही देते हैं, और डुप्लीकेट हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, रिसोर्स भी ज़्यादा यूज हो जाएगा, और ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हमारे बीच हो जाएगा।
अनुकृति मैम ने भी बोला और डॉली मैम ने भी बोला, तो ये यहाँ कोऑर्डिनेशन का भी दिक्कत है। अब उदाहरण की बारी है। किसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर ने सेल्स डिपार्टमेंट को अलाउ किया कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने पे 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं, बट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने सेल्स डिपार्टमेंट को ट्रिक किया कि नहीं, आप डिस्काउंट 5% ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो सेल्स डिपार्टमेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात में हम माने, मार्केटिंग की बात माने, किस फाइनेंस की माने। मार्केटिंग की मानेंगे तो मेरा सेल्स बढ़ जाएगा, लेकिन फाइनेंस की मानेंगे तो हमारा प्रॉफिट बचेगा। तो वो कंफ्यूज जाएंगे कि किसका हम ऑर्डर फॉलो करें। फिर सेकंड एग्जांपल है प्रोडक्शन फॉरमैन, किसी कंपनी का है, जो प्रोडक्शन मैनेजर ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि प्रोडक्शन को बढ़ाने का, बट सेल्स मैनेजर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि प्रोडक्शन को घटाना है, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है जिस ट्रेंड का, वो अलग है हमारे प्रोडक्शन से। तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका हम माने, मार्केटिंग की माने कि ये प्रोडक्शन मैनेजर की माने। तो अगर प्रोडक्शन मैनेजर की मानते हैं तो हमारा ये क्या कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और सेल्स की मानेंगे तो हमारा जो रिसोर्सेज है और टाइम है दोनों बच जाएगा। थैंक यू। आई वुड लाइक टू इनवाइट अश्विन टू टेक द माइक एंड फुलफिल and continue with the proceedings of this presentation. Good afternoon all. My name is Ashwin Ramadi. I'll explain the topic unity of direction. Unity of direction. The major need for unity of direction is for our success. Like I'll explain. The two main components are a unit, a plan. We start. A unit and a plan are required for a group of members for the achievement of the similar goal, same goal. It implies that there should be a head and a plan to achieve the common goals. Now I would like to tell the disadvantages and advantages of unity of direction. Positive advantages are it increases. I like to tell you the basic example. Like if a company is manufacturing motorcycles as well as cars, then they should have two separate divisions for both of them. Each of them should have its own in charge, plan and resources. Both motorcycle department and car department will work smoothly if there will be no conflicts among the employees. Now I would like to invite Weber to continue. Thank you, Ashwin. Now I am here to explain another principle given by Mr. Fayol, that is the remuneration of the employee. Remuneration is the compensation paid to the employee from the employer or the workman, and it should be fair from both the aspects, from the organization and from the employee aspects too. As organization also give the fair salaries and remuneration, fair salaries and wages to the employees as it motivates the employees to work at their fullest, and it should be fair for the organization too, for the basic. Very interested in reading what is written on the slide. Please carry on. Yes. Remuneration, compensation should be in the form of salaries, bonuses, commission payments, on-time pays, and it should be for the perks too, as the company gives the houses and cars for the personal use. And now we come to the positive effects and the variation of the. Before we move on to the positive effects, I read one line. Yes, ma'am. An on-site gym or the luxury vacation plan. How many of you as workers of a company, I'm asking this from my
of you would fancy a luxury vacation plan if you performed really well for your company? Somebody from the audience? A fancy vacation plan, if it is offered by the company to you as a mark of appreciation for your hard work? Anyone? कोई वेकेशन पे जाना चाहेगा या फिर आपको एक बोनस या एक सैलरी अप्रेजल ज़्यादा अच्छा लगेगा? Anyone from the audience? Or we could also have members from our team expressing their opinion. Ms. Komal? Thank you for giving me an opportunity to give the answer of this question. Louder, louder. Thank you for giving an opportunity to answer this question. So, in remuneration, there are two kinds of remuneration. Think so. One is car incentives, and other is where we get our bonus shares. Cold hard cash. Yeah, actually. So, I would like to give with the cold hard cash. जोरदार तालियां दें cold hard cash will go straight into my bank account. Because if I have a cash, I can manage it whatever way I want. So that's the point. Very well spoken. Smart answer. We can do whatever we want to do with money, but then sometimes we will not want a vacation. What if I've just returned from a vacation and my company is giving me one more vacation? It does not really make sense. But a bonus, a bigger, fatter paycheck does make sense. Just come to the next slide. That is the positive effects and the consequences of violences of this principle. That this principle motivates the employee as he is paid as the cordial. It also enhances the cordial relation between, that is the healthy relation between the employees and the workers, management, and it also improves the commitment of employees towards the organization. And if the principle violates in the organization, it also lacks the motivation and dedication among the employees as they are paid not according to their specialization, and it also leads to the unhealthy relation between employees and management, and it also increases the labor turnover as they are not paid for their specialization according to. And now go to the next slide, that is the example. If a company has earned a higher profit, then it must share some of parts with their employees in the form of bonus, which would be very satisfying to them and motivate them to work at their full efficiency. Now I would like to call Alham Akhtar, for the further explanation of the principle. My name is Anukriti. It's Anukriti, okay? And now I would like to continue with my topic, which is centralization and decentralization. In centralization, there is a hierarchy of formal authority for making all the important decisions by the top level in all organizations, okay? And in decentralization, the decision-making power is left for the lower level. Decentralization is systematic delegation of authority at all levels of organization and at all levels of management and in all organization. For example, in a business concern, a father and son are the owners and decides all the important matters, and the rest of the other functions like product, finance, marketing, etc. are carried out by the department heads, and they have to act as per the instructions and directions of the two people. Therefore, in this case, the father and sons are in this case the decision making power are left for the father and son. जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कि एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, उसमें एक ओनर है और उसके दो बेटे हैं। उसने अपनी बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो डिपार्टमेंट में, एक खरीदारी
खरीदारी की और एक बेचने की। पर उसने साथ में तो बिजनेस कर रहा है, बट उस सारे डिसीजंस जो होते हैं दोनों डिपार्टमेंट के वो ओनर ही लेता है। मतलब लाइक ओनर ही सारे इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर देता है, उसी हिसाब से चलना पड़ता है, चाहे मतलब कितने भी डिपार्टमेंट्स अलग हो। थैंक यू एंड एहलाम जी, आपने भी बहुत अच्छा बोला। इंग्लिश, हिंदी, बोथ वेरी वेल डन। Thank you, Anna, for inviting me. Good morning, everyone. I am here to explain one of Henri Fayol's principle of management, that is scalar chain, which, if not followed, will result in the situation of chaos and confusion in the organization and would directly affect the efficiency of the organization. How? But how? Before answering this question, let's just first understand what actually scalar chain is. Scalar chain is the formal line of authority starting from the highest to lowest rank, that is, from superior to subordinates. According to Mr. Henri Fayol, this principle should not be violated during the normal course of formal communication. But if there is a case of urgency, one can use the concept of gangplank. It means direct communication between two employees at the same level without following the scalar chain. Let's understand this with the help of an example. But before the example, I would like to answer that question. That's why there will be a lack of efficiency if scalar chain is not followed. As I told earlier, scalar chain is the formal line of authority and responsibility. Means it's all pre-decided whom to go in case of some problem and who will have the authority to solve that problem. Now let's look at some examples. There are 3 levels of management in an organization. Top level consisting of CEOs, CFOs, CMOs, etc. Middle level consists of departmental heads like sales manager, finance manager, etc. And lower level management consists of supervisors, foremen that have a direct communication with the employees. So suppose there is a company with 2 departments, finance and marketing. Marketing departments wants funds of rupees 8 lakhs for the upcoming month as they are launching a new product. So they will need more funds to promote it properly, otherwise it will result in lesser sales and result in lesser profits. But finance department is unaware of this, as they allotted only 5 lakhs as a budget. Here comes the role of the scalar chain, as it solves the problem in a smooth manner. One knows whom to contact to solve this problem. There can be 2 solutions to this problem according to the scenarios. The first one, if there is urgency of funds and the amount is not large, the marketing manager can directly contact the finance manager and he can deploy the funds. But if the amount is large, the marketing manager first have to inform Chief Marketing Officer, that is CMO, which will understand the problem and will forward it to Chief Financial Officer, CFO, whom with discussion with the finance manager will deploy the funds if they feel it's right to deploy. We can also take example from the Indian Army outside of the organization. There are various levels in the Indian Army, like Field Marshal, Colonel, Field Marshal, General, Lieutenant General, Major General, Brigadier, Colonel, Lieutenant Colonel, etc. And this is a very strict order. This cannot be disturbed in the normal course of time. But in rare cases, we can use the rule of the gangplank also. For example, suppose if one regiment, the head of the regiment is the colonel. If one regiment gets the report of the intelligence that the enemy troops are deployed to attack some other regiment in half an hour time, then they don't have time to follow the correct procedure. So the colonel must take responsibility by himself
and inform the colonel of the other regiment as soon as possible to save the nation's pride and save the lives of the people. That's all about this principle. I would wind up this principle, and I would like to invite Mr. Athar Tiwari to carry forward this presentation. Thank you. Before we move on to Mr. Athar Tiwari, Mr. Ishmi, huge round of applause for Mr. Ishmi. Why? There is always a why. The delivery of the whole message and the command of the language. One, Mr. Ishmi, you broke down a very complex principle into such simpler components. You explained a very complex principle in a very simplified manner. Like Einstein always said, if you can explain a concept to a 5-year-old, it means that you have understood the concept very well. So that was showcased in your delivery and your presentation today. And number 2, a very good grasp of your grammar, good vocabulary which you have used, not very simple, did not come across as childish, and not so complicated that the audience can't understand it. So a good command of language, along with a good understanding of the concept which was allotted to you, along with simplifying it with such good real-time examples, one from a corporation, one from the Indian Army. Very well spoken, and you have simplified your concept in such a way that a non-management student can also understand it. Very well spoken. Thank you, Shmit. So the principle which I have been assigned to explain is principle of order. So the principle which I have been assigned to explain is principle of order. This principle focuses on maintaining an organized and efficient working environment in an organization. In simple terms, it means keeping things at right places. Just like at our home, we keep our books, clothes very neatly in our room. Organizations also need to organize their work. That is why they follow the principle of order. Now the question is, why principle of order is important? Well, when things are organized, it helps you to find what you actually need, it saves time and increases efficiency. I want you guys to imagine a library where everything is scattered. It will be challenging for you to find the book you want to read. That is why in an organization, all the documents, tools and accessories are organized. If they are not, it is going to create mistakes, chaos and confusion. To prove this point, my team has prepared an act which is directed by me. And to explain this principle more clearly to this wonderful audience, I want to invite the actors. Action. Very low in work. Use the mic. Mr. Verma, I have asked you to bring the files from the past 10 years of our company, Blue Jet. Kindly bring it. Mr. Sharma. Very nice. Yeah. Go and bring the previous year files of the XYZ company. Darling, speak into the mic. Thank you so much. Focus on that fellow. Focus there. Focus there. No. Focus at him. Fellow over there.
ख्याल से प्रॉफिट में ही है। Yes, sir. कोई लॉस नहीं। इसका एक कारण हो सकता है कि आप अपनी सब चीजें सही जगह से रखते हैं और सही जगह में सही आदमी हैं, सही लोग हैं जो सही काम करते हैं। Indeed. मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 5 minutes later. Love that. 10 minutes later. I think you are not serious about it. Please cancel. Could I just bargain? You say one more thing. And eternity later. An eternity later. I think you are not serious about it. Please cancel. So, think of Henri Fayol's principle of order as a secret of keeping things organized in your organization, just like you do at your home, to make your life easier and more manageable. Thank you. Now I would like to call Mr. Ayush to explain the next principle. Very well directed. Wonderful. A very good morning to all ladies and gentlemen present here. Today I, Ayush Jaiswal, is standing before you to introduce the next principle given by Sir Henri Fayol, which is principle of equity. As you can see, the principle of equity means that everyone shall be treated as equally as everyone. It is necessary to treat everyone in the organization equally. It is necessary to develop an environment where all the employees working in the organization feel free from bias and inequality. अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए इक्विटी होता क्या है? Anyone from audience? Audience, feel free to share. Fair and kind behavior to the employees, no discrimination to the employees on the basis of caste, creed, gender. All rules and regulation applies same for all the employees. Thank you. तो ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूरी होता है कि इक्विटी अगर हम कर रहे हैं तो इट इज नेसेसरी टू मेंटेन दी देयर शैल नॉट बी एनी inequality in the term of gender, caste or religion. Principle of equity is a separate term or the law from all other laws. It has different rules, principles and remedies. Like wages that are given to the employees shall not depend on the department they are working. It shall be dependent on the work they are doing. Like suppose तुम्हारा कोई काम कर रहा है, तो मैनेजिंग डिपार्टमेंट में हो, तो सबसे हाईएस्ट वाला और सबसे लोएस्ट वाला सेम को 50,000 रुपये महीना दे दो तनख्वाह, नहीं दे सकते, गलत बात है। अब तुम्हारा जैसे सपोज फोरमैन है, उसको तुम 40,000 दे रहे हो तनख्वाह और तुम्हारा जो उसके अंडर में जो काम कर रहा है उसको 20,000 दे दो, ये हुई इक्विटी। और वैसे नहीं हो। अब सीधी सी बात है, अब कुछ टॉपिक है तो उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स भी होगा। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स इसका ये है, इसमें improves satisfaction and motivation level among employees. It develops coordinated relations between employees and management. अब भाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, बिल्कुल होगा। तो नेगेटिव पे आते हैं, इसमें डिक्रीज इन सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन लेवल। अब तुम्हारे सामने तुम्हारा मैनेजर किसी और को वो कर रहा है, तुम्हारा मोटिवेशन जरूर डाउन होगा। दूसरा, अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। अब तुम एक को प्रमोशन दिए जा रहे हो, दूसरा बैठा है, काम कर रहा है, मतलब उतना नहीं कर रहा पर काम कर रहा है, उसको डिमोटिवेशन मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अभी हो गई इसकी बात। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। दो लोग आएंगे, कोई एग्जाम्पल के वॉलंटियर ऑडियंस के लिए, ऑडियंस हम चाहेंगे बस खड़ा होना है आगे, बहुत कोई भी आ जाओ यार। अरे नहीं, ऑडियंस हम चाहेंगे, हम चाहते थे कृष जी आ जाए, पता नहीं कृष जी थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। आइए तालियां आ जाए। और तो हमारे सामने दो लोग, इनका नाम है अंकित दल्ले, इनका नाम महेश दल्ले, ठीक है। दो दल्ले ब्रदर्स
अंकित दल्ले। Who is the father? Is your father Mr. Rohit Dalle से मुलाकात हो जाए? और भी आ जाइए कोई? Mr. Rohit Dalle. Rohit Dalle, please, आइए. तालियां बजा दीजिए। हाँ तो जी, अब अंकित दल्ले को सैलरी मिलती है 20,000 रुपये महीना और महेश दल्ले को सैलरी मिलती है 23,000 रुपये महीना, जबकि दोनों लोग सेम पोस्ट हेड क्लर्क की कर रहे हैं और दोनों की सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। माना कि दोनों का है फैमिली बिजनेस, पर जब भी इसमें इनइक्वालिटी होगी, रोहित दल्ले जो महेश दल्ले के फादर हैं उनको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उनका बेटा है, और अंकित दल्ले को 20,000 मिलता है, वो उनके चाचा का बेटा है। इसलिए तो इस प्रिंसिपल से हमको ये दिख रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे वॉयलेट हुई है, जो कि गलत बात है। अब रोहित दल्ले को जो सैलरी देनी चाहिए, या तो दोनों को 20,000 दो या फिर दोनों को 23,000 दो, ठीक है। अब एक और मजा नहीं आया होगा, इसमें मजा आएगा। इसमें भी बहुत मजा आया हमें वैसे। अभी आगे कुछ है इसमें? एक एग्जांपल और। Yes. There is an organization named Landcraft Limited, where two employees work, named Bhupinder Jogi and Pushpa Raj. भूपेंद्र जोगी जो है दोनों को सेम सैलरी मिलती है, पर भूपेंद्र जोगी जो है वो अपनी काम के मतलब थोड़ा सा और अपना देते हैं कंपनी को, मतलब अपना एफर्ट्स और देते हैं। अब उसके चक्कर में उनको कुछ एक्स्ट्रा तो मिल नहीं रहा है, तब वो डिमोटिवेट होते हैं। तो ये बात जब मैनेजर को पता चली तो वो टेंशन में आ गए कि अब ये बंदा डिमोटिवेट हो गया, इसे मोटिवेट कैसे करें, और जो पहले के जो है जितना हमारा टर्नओवर था उसको वापस उसमें कैसे लाएं इक्वल में। तो वो अब वो कोई बताना चाहेगा क्या कर सकता है मैनेजर की जिससे मोटिवेट हुए वो बिना सैलरी बढ़ाए। ऑडियंस में से कोई जवाब दे। ये तो डिमोटिवेट हो गए, इनका नाम क्या था जो डिमोटिवेट हुए? भूपेंद्र जोगी। भूपेंद्र जी डिमोटिवेटेड है। From the audience, somebody. टीम मेंबर्स में पिछले भी दे सकते हैं, कोई देना चाहे तो। Team member is Pawan. There's another option that is known as recognition. Good. So इससे उनका मोरल अप हो सकता है by recognizing him in the front of every team members or in the employees, in the front of employees. So that's the answer. बिल्कुल सी तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो ये तरीका हो गया, और तारीफ करने लोगों के साथ। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है हम सैलरी नहीं बढ़ा सकते पर उनको बोनस तो दे सकते हैं ना। एक महीने का सपोज एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, उनको पेड ट्रिप्स पे भेज दिया, जिससे तुम्हारा उनका मोटिवेट हो जाए वो, और उनका वापस उनको जो कंपनी को टर्नओवर है वो वापस पूरा मिल सके। तो इससे हमें ये पता चलता है इसमें मतलब जब मैनेजर को पता चला कि इक्विटी नहीं हो रही है तो उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया जिससे इक्विटी हो जाए, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो हो जाए। अप्रिसिएशन से तो ज्यादा बोनस मिल जाएगा तो मोटिवेट हो जाएंगे भूपेंद्र जी। थैंक यू गाइस। That's all from me. Now I would like. अच्छा बोलिए। Now I would like to invite Khalil Tripathi to carry on the presentation fully. Let's welcome our next speaker. Good afternoon, everyone. Thank you guys for introducing me. Now let's begin with the next principle of Henri Fayol. Subordination. Could you keep the mic closer to your mouth? Subordination of individual interest to general interest. Hello. Subordination of individual interest to general interest. According to this principle, the interest of organization must supersede the interest of individual. In the organization, each and every individual or employee working with some objective, and there is always objective of the organization. If the objective of the organization and objective of the individuals are in the same direction, then there is no problem. But if the objective of the both groups are in different direction, then manager must try to reconcile the interest of the individual with the interest of the organization goal. Each and every principle have some positive and negative effect. So let us discuss the positive effect of this principle. It helps in achieving organization goal. It helps to bring coordination between the individual and organization. And negatives
aspects of these principles are is that the firm is not able to achieve its organization goal, lack of coordination between individual and organization. Let us explain with an example. Manager whose objective is to earn higher profit and organization is going through financial crisis, then manager must sacrifice his interest and organization. When organization recovers from the financial crisis, then the managers can show his interest to increase his salary. Thank you. And at last, I would like to ask the debate to take over the mic and carry the forward presentation. Thank you, Karin, for introducing me so well. And now I would like to start with my topic, and my topic is stability of tenure of a personnel. As we know, necessity is the mother of invention. So, when Mr. Fayol observes that the frequent termination or transfer brings a negative impact on an organization, and that organization would not achieve their goals effectively and efficiently. This frequent termination or transfer also brings a fear of job securities among the employees so that they cannot contribute their maximum towards the organizational goals. To avoid these kind of situations, Mr. Fayol introduced a principle which is called stability of tenure of a personnel as part of his 14 principles of management. This principles refers to no frequent termination or transfer. According to these principles, the organization should provide a feeling of job securities among the employees so that they can feel secure and contribute their maximum towards the organizational goals. अब उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय अपॉइंट की गई हूँ और वहाँ पे मुझे मेरे काम सीखने में, उस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्वमेंट के साथ फ्रेंडली होने में मैंने काफ़ी टाइम ले लिया। फिर एक टाइम पे मैं सेटल डाउन हो गई इस इन्वॉल्वमेंट में। फिर क्या हुआ, जैसे ही मैं वहाँ सेटल डाउन हुई, मुझे उन लोगों ने टर्मिनेशन लेटर दे दिया। फिर मेरे रिप्लेसमेंट में उन्होंने किसी और को हायर किया। फिर उस एम्प्लॉय ने भी काफ़ी टाइम लिया चीज़ों को समझने में, रिसोर्सेज यूज़ किए, अपने काम को सीखने में, इन्वॉल्वमेंट के साथ फ्रेंडली होने में। तो फिर उन्होंने उसको भी टर्मिनेशन लेटर दे दिया और ये प्रोसेस वो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करती रही। इससे क्या हुआ, उस एक टाइम पे वो ऑर्गेनाइजेशन डिसोल्यूट हो गई क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उन लोगों ने वेस्ट वहाँ पे, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल एज रिसोर्स हो रहा है। तो इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मिस्टर फेयोल ने ये प्रिंसिपल बनाया जिससे हम टाइम को बिना वेस्ट किए अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं जॉब सिक्योरिटीज देकर, तो ताकि वो अपने काम को अच्छे से करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे। तो अब यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और मैं बुलाना चाहूँगी कोमल को, वो आए और इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू। बहुत ही अच्छा ब्यूरोक्रेटिक टच दिया आपने अपनी वाणी को विराम देके। वेरी वेल स्पोकन। Thank you so much, Asa, for calling me on this so interesting, so enthusiastic floor. So before I begin, I would ask someone from the audience to come on the stage. Anyone from the audience? Anyone from my team? After all, we all are leaders. Oh, please, ma'am. Do I have to come on? No, ma'am, actually, there is a small thing. I could become a guinea pig for you. If you want to come, ma'am, I will love Absolutely. I'm getting bored anyway. I'm getting bored sitting. So, before starting the explanation of my topic, I would like to give a live example
did not ask me to pick it up, but it happened instantaneously because whether I'm in a professional or a personal setup, I would have done it for anyone, anyway. But it was a matter of humor that I dropped it again when you said it because that's my personality. But jokes apart, I would have done it nonetheless, anyway, for anyone. So the point that I wanted to raise here is any step that we make forward for any work. Now you may go, please. So you want me to go back? If you understand with me behind me, I will be. Nah, I gotta go back to my place then. My job was to only pick the pen for you? Yes. So the point that I wanted to raise here is the first step that we make forward for any work, that is known as initiative. Are you trying to say I took an initiative for you? Yes, ma'am. Ah, who does not Even love though by a last yourself. moment of initiation? Even though by yourself, you took the initiative by yourself. So, good afternoon, ma'am, and young ladies and gentlemen. I am Komal, presenting Principle of Initiative, which is one of the 14 Principles of Management given by Henri Fayol. This Principle of Initiative is one of the 14 Principles of Management, emphasizing the importance of empowering employees to take independent action. कुछ साधारण भाषा में समझने की प्रयास करते हैं। So, it emphasizes the workers to go beyond their routine tasks and actively contribute. इसमें ज़्यादा कम है। So, actively contribute ideas, suggestions, efforts to improve the organization. This principle recognizes that innovations or creativity doesn't only come from top management. Instead, everyone in the organization should feel motivated. By fostering a culture of initiative, companies can tap diverse skills and creativity of their workforce. It's like turning each employee into a proactive problem solver. Oh, very nice. Very nice terminology. Proactive problem solvers. क्या बात है? Very well spoken. Please continue. So, here the fact of the matter is, it leads to increase the efficiency, adaptability, and overall success of the organization when we give freedoms and belonging and sense of belongingness to our employees. It's like in our organization, if you see each and every individual plays a vital role in an organization. So, please move down slides and go to the positive and negative consequences of the. Okay, let's talk about if we violate this principle, what happens? Just imagine. In a classroom, professor comes in and enter a classroom and he gives his lecture with full swing without interrupting with you all. How do you feel, yaar? I feel bored and I would sit there for the sake of my attendance. Just your physical appearance is there, not mentally you are. And just imagine Professor like Miss Sharma. Are you trying to impress me to fulfill some of your ulterior motives with me after 5 p.m.? No doubt, it's absolutely no doubt. Who don't want to impress you? I love a woman or a man of honesty. I love that. Yes, please carry on. So, did you notice when she entered with full enthusiasm and full energy, she grabs all the attention of her. Ever you notice? I know, we are continuing. So by this, we feel what? What we feel? No answer. Belongingness, sense of belongingness.
Let there be 5 events today. We are having our presentation today. She took the initiative by heart. We presented our presentation in a full swing in this auditorium. Don't you think so? This gives to us also initiative to be presented ourselves in a full, confident manner and presenting our public speaking in all of you, in front of all of you. So, the point that I want to be clear here that अगर ऐसा मैम हमारी करती है तो इनसे होता क्या है? ये जो टॉप नॉच क्रीमी लेयर है हमारी क्लास की, उसको टैप कर लेंगी और जब कंपनी आएगी प्लेसमेंट के लिए तो उसको ऑफर कर देंगी. तो by this, when a company implement this initiative, principle of initiative in his organization, their company, so they also can tap the creativity and skills of their worker. ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है. ऐसे नहीं है डिफाइन ने इसको मेंशन कर दिया अपनी 14 प्रिंसिपल में. बहुत बेसिक चीजों का ध्यान रख के इन्होंने किया है. अगर आप देखेंगे डिसिप्लिन नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता होता कि नहीं, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात आती है तो ये भूल जाते हैं लोग. इस वजह से इसको मेंशन किया गया इस 14 प्रिंसिपल में. So now I would end my explanation on this topic. और हाँ, अगर किसी के पास कोई प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है मेरे लिए पूछने के, तो मैं बहुत ही I would glad to answer them. If any would have on that. Rishi. अरे वाह. Wait. Guys, you know he is the most intellectual and best sense of humor in the class. ओके, तो आपने थोड़ी सी ये नॉर्मली इसको टांग की शायद बोलते हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं. इनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर है. ठीक है. एक सवाल मैंने एक बार बहुत पहले भी पूछा था, प्लेटफॉर्म लेवल पे हम किस तरह फॉलो करेंगे इसको. वो सवाल मैं नहीं दोहरा. कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद पूरी थी. जैसे आप दोबारा बोल दीजिए, तालियों में आपकी आवाज दब गई. आपकी भी उम्मीद. मुझे उम्मीद पूरी थी आपसे. मेरे विचार और ध्यान में जरूर था कि कृष्ण जी खड़े होंगे और हमसे ये सवाल जरूर पूछेंगे अपना. मुझे भी मजा आएगा आंसर देने में इसका. तो जैसे कि पहले ही मैंने आपको बता दिया, ऐसे हेनरी फॉयल ने नहीं, इसलिए उन्होंने सवाल पूछा नहीं है. मैं पूछ दिया था. नहीं, वो पूछने वाले हैं. नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह, so sorry. ये नया सवाल लेके आए आज आपके लिए. अरे वाह, मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ रिपीटेशन की विद इंटेलेक्चुअल बॉय. चलिए पूछिए. ठीक है, आपके पीछे जो स्लाइड है उसमें एक लास्ट लाइन पे लिखी है, यूजफुल सजेशन शुड बी रिवॉर्डेड. तो आपको ऐसा नहीं लगता जो सुपीरियर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स का रिवॉर्ड जो होता है वो सही टाइम पे नहीं देना, या उनको उस तरीके से नहीं बताना, या उनको उसके लिए ग्रेटफुल ना दिखाना कि हम आपके सजेशंस को किस तरह से इनिशिएट कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा, आप कहना चाहते हैं सुपीरियर्स ऐसा सही टाइम पे नहीं करते हैं, सबऑर्डिनेट नहीं करते हैं. वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट अगर पता चलता है मैनेजमेंट को तो सुपीरियर के साथ क्या होना चाहिए? सुपीरियर के साथ क्या होना चाहिए? अगर उस सुपीरियर ने सही तरीके से उस चीज को इनिशिएट नहीं किया है और उस अपने जूनियर को उस चीज का क्रेडिट नहीं दिया है तो सुपीरियर के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, अब इस हमारी चीज को ध्यान रखिएगा. मेरा टॉपिक ब्यूरोक्रेसी है. अब जैसे कि आपने सुपीरियर की बात की है, तो सुपीरियर से पंगा लेना सही नहीं होता है, नहीं तो हम फायर भी हो सकते हैं. तो अगर ऐसा है तो हम ऐसा करें. आपने यूनियन का नाम सुना होगा ना, ऑर्गेनाइजेशंस में यूनियन बनती है. वो पुराना
साथी संबंधी को जोड़ूंगी और एक अच्छा सा पत्र लिख के दूंगी, जिससे कि मैं अपनी भावनाओं को उनके सामने प्रदर्शित कर पाऊँ। और उसके बाद से अगर वो उससे सहमत होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं रिजाइनेशन लेटर देना चाहूँगी उनको। आप ब्यूरोक्रेसी नहीं फॉलो कर रहे? किस काइंड की ब्यूरोक्रेसी में नहीं फॉलो कर रहे? अपने ब्यूरोक्रेसी कहाँ से? एक आईएएस ऑफिसर जो इतना सब कुछ पढ़ के इतना मेहनत करके बना हुआ है, उसने आईएएस अपनी पोजीशन ली है, वो सारी पोजीशन अपने छोड़ देगा अगर उसके साथ ऐसा होगा। अच्छा, अगर आपने देखा हो तो आईएएस ऑफिसर को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। आजकल का इतना करप्शन और इन सब चीजों में है कि आईएएस ऑफिसर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वहाँ तो ब्यूरोक्रेसी नहीं फॉलो हो पाई ना, क्या किया जाए उसका? रिजाइन तो देगा नहीं, ट्रांसफर ही हो जाते हैं फिर। Good point. I would like to add something here. मान लीजिए, last point. An organization must have an employee suggestion system, and employees with useful suggestions should be rewarded. Let's tackle the private sector first. मान लीजिए, she is a CEO. अब इनसे बड़ा कौन ही होगा? इनसे नीचे अगर कोई होगा तो कोई डिपार्टमेंट हेड होगा, HR मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर भी जनरल मैनेजर आता है. मान लीजिए she's a production manager and the general manager, and somebody from the audience will be working under her. Now let's say Miss Neha gave a very useful suggestion which was utilized by the company, and the company did maximize on the profits for that particular upcoming quarter. But Miss Neha Chauhan was not appreciated or recognized or rewarded appropriately for her suggestion. This is known to this particular manager. However, she now reaches out to me and the news reaches me, who is the general manager. I, as a part of the whole corporation, am going to sit down with this manager, coach this manager, and instruct this manager to take the appropriate action to reward Miss Neha Chauhan appropriately. अब आज नहीं हुआ तो कल हुआ. Had she been a good manager, she would have done it in her way, the rightful way, at the right time. But if it is not done in a company or a corporation, which is usually the case, unfortunately, most of the employees go unrewarded or unrecognized, the general manager on top of this lady would make sure that this thing gets done and the rightful due reaches Miss Neha Chauhan. This is the corporate system. बच्चों समझिए, corporate system बहुत आसान है हैंडल करना. यहाँ पर अपनी चलती है, किसी को भी फायर किया जा सकता है. We are not answerable to anyone. काम अच्छा नहीं है, फायर हो गए. 10 बार सारा क्रेडिट खुद ले लिया, मिस नेहा चौहान को लाइट में नहीं आने दिया, फायर हो जाएंगे. ये तो क्या? प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर. We think of an IAS officer, let's say. IAS officer का कितना बड़ा पद सोच लेते हो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा? कलेक्टर. कलेक्टर. वो कलेक्टर कब तक करते रहते हैं? 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 साल. कलेक्टर के ऊपर कितने सारे लोग बैठे हैं बता सकते हैं? या फिर ये जो होते हैं IPS ऑफिसर्स, मुझे तो SP बनना है, टॉप पोस्ट जो आपको लगती है. भाई SP के ऊपर एक समय के बाद 14-15 साल नौकरी करने के बाद कोई DGP आता है, फिर कोई ADG आता है, और कोई नहीं तो फिर बहुत सारे मंत्री आते हैं. पॉलिटिकल सिस्टम आपकी ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज़्यादा घुला मिला है. चीफ मिनिस्टर आते हैं. अब मान लीजिए आई एम अ कलेक्टर, somehow I am doing whatever I am doing. I am not rewarding my subordinates in my bureaucratic system. I am taking all the credit. Yes, मानिए चाहे ना मानिए, ये हमारे देश की अफसरशाही है, नौकरशाही है. यहाँ पर ये जो गड़बड़ छाला है काफी समय तक चल जाता है. There are a lot of reasons for it. अगर मैं इनको प्रमोट नहीं कर रही कलेक्टर, मैं इनको प्रमोट नहीं कर रही कलेक्टर, मैं सिर्फ सारा क्रेडिट खुद खाए जा रही हूँ, मंत्री को खुश रखती हूँ, ठीक है, ये इसको ज्यादा समय तक सह लेंगी. कॉर्पोरेट में नहीं है. Why? बिकॉज एक तो सरकारी नौकरी, सरकारी सिस्टम,
कोई पंगा ले लिया तो प्राइवेट सेक्टर के अनलाइक पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे गड़बड़ छाले इनके करियर के साथ हो सकते हैं without any explanations given on a single piece of paper with a signature. So she is going to, chances are, keep her mouth shut for a long time. So will she. Having said that, let's come to a situation where she's a very bold officer. She decides to take the step. And everything goes right. The minister is a very fair minister. The minister comes to know that the collector has been collecting all the praise and the promotion at the expense of these divisional forest officers, for example. The IAS officer is going to get suspended. I might get fired in a private setup, or I might get suspended in a public setup. It will happen. However, unfortunately, the clarity of the process of the organization is much more in a private sector because they don't give a damn to what's happening with the whole bureaucratic system. The whole corporation is under 5 people who are known as what? The board of directors. Yes or no? ये अपनी कंपनी है, 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तो इसको चलाते हैं और टॉप पे कौन है? सीईओ. क्या हमें किसी से डर है? क्या हमको कोई कंट्रोल कर रहा है? Is the chief minister controlling us? Are we controlled by the country, the prime minister? No. We can take our decisions. We will fire her or the company would fire me or anybody else. काम आसान है. There is a lot more clarity and transparency, and because of transparency, a lot of boldness in the employees who feel unrecognized. In a bureaucratic system, it is not just a bunch of generalist administrative officers. It is not a group of administrative officers. आप लोग bureaucrats हैं, but you are controlled and governed by something else above bureaucracy. Mr. Krish बता सकते हैं bureaucracy के ऊपर कौन है? Democracy. Yes or no? The democracy is running the bureaucracy. भाई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, क्या ये चुनिंदा 6-7 लोग राष्ट्र को चला सकते हैं? Is the president running the country? Is the prime minister capable of running the country? The high courts, the supreme court, are they capable of doing everything on their own? Because they knew they couldn't, they set up the UPSC. Yes or no? The Union Public Service Commission. Every year these exams are conducted to hire bureaucrats who will not run the system, who will take instructions from the democrats and implement and execute the instructions of the democrats. At the end of the day, bureaucracy is a very fancy term. Bureaucrats have a lot of power. But Max Weber says, darling, it's not power, it's authority. It's given to you via a legal system. इसलिए इसको authority बोलते हैं. क्लास में बताया है, जब कोई पुलिस ऑफिसर आपको कॉलर पकड़ता है और आप कहते हैं ये क्या कर रहे हो? मुझे authority मिली है, power नहीं मिली है. कुछ हुआ है, आपने गलती करी है, legal system ने मुझे license दिया है, I am authorized to grab your collar. So, being a bureaucrat is a very fancy system. आप एयरपोर्ट पे जाते हो, लखनऊ एयरपोर्ट मान लो, चलो लखनऊ छोड़ो, बैंगलोर एयरपोर्ट, बहुत भीड़ लगी हुई है, सबको जाने में बड़ी मुश्किल हो रही है. अभी ये आए, आपका नाम बताओ बेटा? अथर्व तिवारी, सब कॉर्पोरेट, इनको जाना है हैदराबाद, फ्लेक्सी फेयर पे ट्रैवल करना है, हाथ में सिर्फ एक लैपटॉप है, फिर भी एयरपोर्ट में घुसने में 2 घंटे लग गए यार. I'm a bureaucrat. मुझे जाना है बिहार, हैदराबाद से. अब मेरे को मेरी माँ ने अचार भी दिया है, समोसे भी दिए हैं, सब तरीके का तमाम सामान दिया है, कुछ चाकू छुरे भी मेरे किसी बैग में रखे हुए, 10 बैग्स लेके चल रही हूँ मैं. लेकिन हम तो अफसर हैं, अफसरशाही,
हमारी एंट्री भी तुरंत हो गई, वो अचार बचार भी सारे आ गए सिक्योरिटी से पास होके, वीआईपी लाउंज में भी बैठे हुए हैं, एयर इंडिया की हमारी फ्लाइट है, पहुंच गए. सो इट्स अ वेरी फैंसी सिस्टम, बट the only thing which a bureaucrat should always remember is that we are always governed by democracy. हाँ, एक ब्यूरोक्रेट को जब इतने फायदे मिलते हैं, इतने एडवांटेजेस मिलते हैं पावर की वजह से, जो कि सही कायदे से देखा जाए तो अथॉरिटी है, लेकिन पब्लिक उसको पावर समझती है. तो जब कोई बहुत पावरफुल दिखता है ना, तो उससे पंगे लेने में उसके सबऑर्डिनेट्स को डर लगता है, because there's a lot of power which comes with bureaucracy. You don't have that level of power in a corporation. So, general manager can be reported for his bad actions or inappropriate behavior or lack of professionalism. But an IAS collector will not be so frequently reported by a subordinate because he does have a lot of authority. He could misuse his authority on paper in n number of ways, and God knows what will happen to my job. Will I get promoted next year or not? तो अफसरशाही जब आप करने लगते हैं, तो काफी हद तक कभी-कभी तानाशाही में भी इन्वॉल्व होने लगते हैं. बहुत सारे शब्द निकल के आते हैं इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में. नौकरशाही, फिर अफसरशाही, तानाशाही, डाकाशाही, और ये खास तौर से इंडिया के लिए, ये आपकी प्रेजेंटेशन के लिए नोट कर लेना, खास तौर से इंडिया के लिए दृष्टि आईएएस के जो बहुत ही फेमस डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान हैं, हु इज नोन एज अ टॉप इंटरव्यूअर. धौलपुर हाउस में जितने भी लोग सेलेक्ट होकर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पहले मॉक इंटरव्यूज के लिए विजेंद्र जी के पास आते हैं. तो विजेंद्र जी कहते हैं कि खास तौर से जो पुरुष, जैसे आपने इनसे सवाल पूछा ना कि उस सीनियर का क्या होगा, बहुत बार उस सीनियर का कुछ नहीं होता. आपकी बात सही है. और क्यों नहीं होता? वो कहते हैं कि जो पुरुष राजस्थान, यूपी और बिहार की बेल्ट से आते हैं, ये सुनने में आपको कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गौपट्टी, इंडियाज हिंदी बेल्ट, काउ बेल्ट. इस गौपट्टी से जो पुरुष आ रहे हैं, वो अक्सर इस परीक्षा को, यूपीएससी की परीक्षा को, या फिर इस परीक्षा से आने वाले पदों को, जो आपके रैंक्स हैं और हायरार्कीज हैं, उनको एक बहुत ही ज्यादा ये राजाई और सामंती शाही पद से देखते हैं कि हमारे पिताजी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब हम सिलेक्ट होके बताएंगे, पड़ोस में इससे झगड़ा हो गया तो आईएएस अफसर बन के घर में इसके डाका डलवाएंगे, रेड पड़वाएंगे, इसको फंसवाना है, इसने पंगा लिया था. वहां हमारे किसी गांव में किसी ने हमारी जमीन हड़प की है, उससे बदला लेने के लिए कलेक्टर बन के एक दिन गांव जाएंगे. आईएएस कलेक्टर बने हुए हैं तेलंगाना में, हैदराबाद में, लेकिन हर एक ब्यूरोक्रेट अपने गांव में ही सबसे बड़ा बंगला बनवाता है. यस और नो? देखा ही नहीं देखा है? नौकरियां आप कर रहे हो किसी दूसरे महानगर में, कैडर हो सकता है आपका महाराष्ट्र, लेकिन है आप मान लीजिए बिहार से, बिहार के किसी छोटे जिले से, उस गांव में ही जाके आप अपना सबसे बड़ा पेंट हाउस बनवाते हो. क्यों? क्योंकि वहीं के लोगों को दिखाना है, वहीं पर किसी से पंगा लिया हो. तो ऐसी अगर आपकी मानसिक स्थिति हो, तो यूपीएससी में ऐसे लोगों को आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर 1, जिन कारणों से आप आ रहे हैं वो स्वास्थ्य कारण नहीं है, और नंबर 2, यूपीएससी परीक्षा से ये जो पद मिलते हैं, उनकी ये सही व्याख्या नहीं है. ये कोई राजाई पद नहीं है, ये शाही पद नहीं है. यू आर जस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट. द वर्ड सर्वेंट इज यूज्ड फॉर यू. गवर्नमेंट सर्वेंट्स, generalist administrative officers. But because bureaucracy gives you such a high level of authority, people are often scared of approaching you. It is the sad truth of our country. Bureaucracy तो इंडिया में भी है, bureaucracy यूएसए में भी है, very healthy bureaucracy. लेकिन एक बात है, बताइए ऑडियंस, अमेरिका में आपको bureaucracy या सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का ऑब्सेशन ज्यादा देखने को मिलता है
या इंडिया में? बताइए। अमेरिका में तो जाते हैं, एग्जाम पास करते हैं, 5-10 साल काम करते हैं, बाहर आके अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, मल्टी बिलियनर्स। ये जो ऑब्सेशन है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कल्ट। द यूपीएससी कल्ट हैज बीन क्रिएटेड इन इंडिया। ऑब्सेशन है, तो इस कल्ट को प्रमोट मत करिए, क्योंकि ये जो कल्ट प्रमोट करने वाले हैं, ये इन पदों को शाही पद, सामंती शाही पद से देखते हैं। तो जितने भी लोग IAS या IPS ऑफिसर्स बनते हैं विद अ फ्यूडल सिस्टम इन माइंड, बदला लेना है किसी से, कहीं पर जाकर किसी पे रुतबा झाड़ना है, राज जमाना है, तो ये नौकरी आपके लिए है नहीं। मैक्स वेबर ने यही बोला है कि ब्यूरोक्रेसी करने के लिए वही इंसान ठीक है who is not the best person for the job, but the right person for the job. A generalist administrative officer and a servant. अगर आप एक servant के mindset से सरकार की नौकरी करने को तैयार हैं तो ब्यूरोक्रेसी में आइए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। इसीलिए सीनियर से कोई पंगे लेता नहीं है ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन कॉर्पोरेट्स की दुनिया में अगर ये जवाब दे तो पंगे लेना बहुत आसान है। एक बार मौका दिया जाएगा, दूसरी बार मौका दिया जाएगा, 3 बार मौका दिया जाएगा, चौथी बार फायर कर दिया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी में अगर मिनिस्टर अच्छा हुआ, आसपास के ब्यूरोक्रेट्स अच्छे हुए, सामंती टाइप के नहीं हुए, फ्यूडल नहीं हुए, तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम देखा जाता है, बिकॉज ऑफ द फियर इन द माइंड। डर लोगों के दिमाग में भर होता है। और भी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन में भी काम करें। Thank you so much, ma'am, for coming here and explaining in a wonderful way. Thank you, ma'am. So now that's all of my topic. I hope you are clear with my topic as ma'am also explained on it. So now I would call Mr. Sagar to carry forward the presentation in full swing. Is I looking good? अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे? गर्ल्स सागर जी मैम लड़कियां शर्मा रही हैं, वो मेरे मुंह में बोल नहीं सकती कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं। ये शर्माना कब सोने लग गया हमारी क्लास में? शर्माना तो बोल, जो भी बोलना चाहे बोल दीजिए। अच्छा लग रहा है। Thank you. Very nice, sir. Thank you, Komal. You really rock it. अरे एक चीज हाँ, कोमल के लिए मेरे को तारीफ करनी थी। Please note this. This has to be on record. Komal, you have a very catchy and a very attractive way of speaking, and not just verbal communication. Your body language, your facial expressions, they were all very expressive. Good job. So what's up, guys? Are you getting bored or enjoying our presentations? I'm enjoying. We also. I want to ask to my audience, are you enjoying? पंगे ले रहे हैं आपसे। क्या पंगे? कोई बोला क्या आपके बोर्ड? बोर्ड? पंगे ले रहे हैं। चलिए अगर आप बोर्ड हो भी रहे हैं तो उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना। विरोधी टीम मेंबर्स बोल रहे हैं कि हम बोर हो रहे हैं। विरोधी। अरे अरे अरे, पॉज कर दीजिए। शर्मा जी बोल सकते हैं, मैं मान सकती हूँ। चलिए अगर हमारी टीम से कोई बोर हो रहा है तो बाद में वो मुझसे मिल सकता है। So I am here to tell you about the 14th principle of Henri Fayol, his Esprit de Corps. It is the last principle given by Henri Fayol. I would like to repeat the word Esprit de Corps. First, I am going to tell you what is Esprit de Corps. Second, I am going to tell you what is the deep meaning of
of SPD crops, and third I would like to give some social message to our society also. Now first, what is the meaning of SPD crops? The principle of SPD crops means union in strength. The managers should develop a team spirit in employees, and the organization should work as a team, and all the employees as its members. Teamwork is the foundation of success. ये तो चलिए रटी रटाई और लिखी लिखाई बातें हो गई। मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। SPD crop is a French word. ये एक French word है। It simply means teamwork, team spirit and unity. SPD crop 3 वर्ड से बन रहा है। SPD crop 3 वर्ड से बन रहा है। टीम स्पिरिट एंड यूनिटी। ये तीनों वर्ड इंटरकनेक्टेड है, लेकिन इन तीनों के डिफरेंट मीनिंग है। पहले आते हैं हम लोग टीम स्पिरिट में। पहले आप हमें ये बताइए कि स्पिरिट क्या होती है? स्पिरिट क्या होती है? आत्मा। थैंक यू आयुष, हम लोग को आत्मज्ञान देने के लिए। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। स्पिरिट मीन्स आत्मा। और ये आपको पता है जो टीम स्पिरिट है ये किसकी आत्मा है? ये ऑर्गेनाइजेशन की आत्मा है। तो टीम स्पिरिट है हमारी, जो टीम स्पिरिट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के अंदर होती है, वो आत्मा होती है ऑर्गेनाइजेशन की। अब आप एक उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। समझ लीजिए यहाँ पे राहुल नाम का एक कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही बीमार है। वो लास्ट स्टेज में, कोई राहुल नाम का है तो नहीं आता, क्योंकि ये बाद में मरने वाले हैं। तो यहाँ तो राहुल नाम का यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि लास्ट स्टेज में है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसके फैमिली मेंबर्स उसको हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, अब वो जिंदा नहीं है। तो हमारे रिचुअल्स में, हमारे हिंदू रिचुअल्स में आपको पता है क्या होता है? जब आदमी कोई जिंदा नहीं होता है तो उसकी आत्मा कहते हैं कि उसके अंदर से चली गई। कहते हैं ना, उसकी आत्मा उसके अंदर से चली गई। तो इसी तरीके से जैसे आयुष ने बताया कि टीम स्पिरिट का मतलब आत्मा होता है, तो राहुल की आत्मा उसके अंदर से चली गई। और जो उसके रिश्तेदार ये कह रहे थे कि राहुल एडमिट है। प्लीज सत्यम, प्लीज सिट डाउन। तो मैं फिर से शुरू करता हूँ। राहुल नाम का एक लड़का है जो कि अपनी लास्ट स्टेज में है। वो अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। सारे रिश्तेदार आके कह रहे हैं राहुल तुम कैसे हो, राहुल तुम ठीक हो कि नहीं हो। लेकिन वही राहुल जब जाके मर जाता है, मरने का मीन अगर उसके अंदर से उसकी आत्मा चली जाती है, तो वही रिश्तेदार पता है क्या कहते हैं कि डेड बॉडी निकली कि नहीं निकली। राहुल नाम का जितना भी वैल्यू होती है सब खत्म हो जाती है। वो सीधे आ जाता है डेड बॉडी पे कि डेड बॉडी निकली कि नहीं निकली। उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि उसके अंदर से उसकी आत्मा जो है वो चली गई है। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम स्पिरिट जो उसकी आत्मा है वो चली जाती तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होता, वो एक बस डेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। वो सिर्फ एक डेड ऑर्गेनाइजेशन होता है और कुछ नहीं होता है। अब पहले सबसे पहले टीम स्पिरिट आती है, फिर टीम वर्क आता है और फिर यूनिटी आती है। टीम स्पिरिट का मतलब ये होता है कि साथ मिलकर काम करने की इच्छा। टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है? साथ मिलकर काम करने की इच्छा। टीम वर्क का क्या मतलब होता है कि हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और यूनिटी का मतलब क्या होता है? ये हम लोग करते रहेंगे। ये मतलब होते हैं टीम सबके। लेकिन अगर आपके अंदर टीम स्पिरिट ही नहीं है तो आप काम करोगे कैसे साथ मिलकर? अरे भैया, अगर आपको भूख लगी ही नहीं है तो आप खाओगे क्यों? मैनेजर का क्या काम होता है? मैनेजर का यही काम होता है कि अपने एम्प्लॉयज के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के अंदर पहले टीम स्पिरिट को जगाएं। सबसे पहले टीम स्पिरिट को जगाएं, फिर वो लोग टीम वर्क कर पाएंगे। पहले उनके अंदर उनकी टीम के प्रति भावना जागृत करें, उनको यूनिटी में लाएं, उनके तभी वो लोग जाके आगे अच्छे से काम कर पाएंगे। और ये एस्पेक्ट
डी क्रॉप एग्जांपल मेरे लिए एस्पेक्ट डी क्रॉप प्रिंसिपल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज द वन ऑफ माय बेस्ट प्रिंसिपल दैट गिवन बाय हेनरी फेयोल, बिकॉज़ इसी के अराउंड सारे प्रिंसिपल रिवॉल्व करते हैं। आप चलिए 5 एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अपने भारत का। 5 एग्जांपल हम अपने भारत का ले सकते हैं। सपोज करिए भारत एक ऑर्गेनाइजेशन था पहले, उसके अंदर सारे प्रिंसिपल लग रहे थे। टेलर के प्रिंसिपल लग रहे थे, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल लग रहे थे, डिवीजन ऑफ वर्क सब लिखा रहा था। लेकिन एक प्रिंसिपल से वो लोग चूक रहे थे। वो कौन सा प्रिंसिपल हो सकता है? एस्पेक्ट डी क्रॉप से वो लोग चूक रहे थे। तो सब लोग जानते हैं उसके बाद भारत का क्या हुआ? डिवाइड एंड रूल हुआ। वेरी गुड मैम, थैंक यू। डिवाइड एंड रूल, वहां की लैक ऑफ यूनिटी से कहते हैं मेजर रीजन था हम लोग का कि हम लोग क्यों बार-बार हारते गए। लैक ऑफ यूनिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सारे प्रिंसिपल लगा दीजिए, लेकिन आप एस्पेक्ट डी क्रॉप के लगाएंगे तो माफ करेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आपको सबसे पहले फोकस करना होगा इस पे, एस्पेक्ट डी क्रॉप से। फिर आप अपना जितना लगाना है आप लगाइए अपने प्रिंसिपल। मैं एक सोशल मैसेज भी देना चाहता हूँ अपनी सोसाइटी को कि आप लोग पहले ये मानिए कि आप सब एक लीडर है। पहले आप सब लोग ये मानिए कि आप सब लोग लीडर है। अगर हम लोगों को अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है, ग्लोबल लीडर बनाना है, तो जितने भी भारत में रह रहे हैं सबको लीडर बनना पड़ेगा। सबसे पहली बात लीडर का काम क्या होता है? सबको एकजुट करना। सबसे बड़ा लीडर काम होता है सबको एकजुट करना, उनके अंदर टीम स्पिरिट जगाना। सबसे पहले टीम स्पिरिट जगाइए और खुद लीडर बनिए। अगर आप जो लीडर होंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि हमारा भारत भी विश्व गुरु जल्द से जल्द बनेगा। थैंक यू। सागर जी, दैट वाज अ परफेक्ट ग्रैंड फिनाले। आपने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही सहज भाव से इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया। एंड जैसे आपका ग्रैंड फिनाले हुआ है, वैसे ही जो हमारा 14th प्रिंसिपल है, ये आया तो बिल्कुल एंड में है, लेकिन वही बात है जैसे फैशन शोज में भी देखा जाता है, जो शो स्टॉपर होती है उसकी जो ड्रेस होती है, डिजाइनर चुनती है उसी शो स्टॉपर को सबसे बढ़िया ड्रेस देता है। इसीलिए 14th प्रिंसिपल तो है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। और आपने इसको बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग में, बहुत ही सिंपल तरीके से सबको एक्सप्लेन भी किया है। और जो एग्जाम्पल आपने दिया वो भी बहुत ही रेलेवेंट एग्जाम्पल था। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। It's a time for case study. First of all, यहाँ पे बोर कौन हो रहा था? लोग सब बोर भी हो रहे हैं। लगभग लोग तो बुलाए भी पर जा ही चुके हैं। चलिए हम भी आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमको क्रिश जी की बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है कि ये कल एक बोल। क्यों आप बोर हो रहे हैं क्या हमारे प्रेजेंटेशन को देख? इट्स वेरी थ्योरेटिकल लग रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, अभी इसको प्रैक्टिकल कर दे रहे हैं। मजा सबको आएगा, इसमें फन इसमें अनलिमिटेड होगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस थोड़ी भीड़ की कमी है यहाँ पे, बाकी तो सब ठीक है। कोई बात नहीं, एनर्जी से कॉम्पनसेट करेंगे। यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक यू टू मिस्टर सागर। क्रिश जी मौका तो दीजिए Yes, ma'am. बनाने के लिए, कहीं और देख रहे हैं। यहाँ देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक यू टू मिस्टर सागर की वो उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि मिस्टर हेनरी फेयोल ने दिया था, कितने बढ़िया तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से एक्सप्लेन किया। और मैं अपनी टीम को भी बहुत बहुत थैंकफुल कहूँगा कि उन्होंने सभी प्रिंसिपल्स को बहुत उम्दा तरीके से बताया, डिस्क्राइब किया। और 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो आप लोग शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पिछले 1.5 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सही है? आवाज नहीं आई मुझे। तो चलिए टेस्ट हो जाए छोटा सा। स्टडी के फॉर्म में हो जाए आवाज, मुझे अभी भी नहीं आई। Are you ready? Yes, we all are ready. Yes. Good. सबको केस स्टडी दिख तो रही है ना, सब क्या लिखा है? दिख रही है? आप लोग रीड कर लीजिए, इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप लोग आंसर कीजिएगा। लेकिन हाँ एक बात है, उसको आंसर देने के लिए 3 नियम है, बहुत बढ़िया वाले। पहले तो कोई शोर नहीं मचाएगा, हालांकि ऑडियंस
मिली होगी, पासबुक भी मिली होगी, किसको नहीं मिली है भाई? आयुष को नहीं मिली, उसने मुंह से हिलाया। सही बात। और इधर खुला हुआ नहीं मिलेगा, इनका अकाउंट ही खुला हुआ से क्यों मिलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी जनधन खाते करवा रहे हैं, कम से कम खुलवा लीजिए खाता अपने भी, कोई बैलेंस करवाइए भाई। बिल्कुल अच्छा किस पे करेंगे? कोई है ही नहीं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बैंक है जिसका नाम है HDFC बैंक, जहाँ पे बहुत सब वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। देख सकते हैं आप लोग, कैश डिपॉजिट करने का, कलेक्ट करने का, पेमेंट करने का, चेकबुक भी इशू करता है और चेकबुक में जो एंट्री चढ़ती है वो भी चढ़ाता है। तो ये सब एक्टिविटी हर एक डिपार्टमेंट में होती है, हर एक कंपार्टमेंट में होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो हर कंपार्टमेंट में एक बंदा बैठा रहता है जो कि स्पेशलाइज होता है और बहुत एफिशिएंट होता है अपने वर्क को लेके। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होता है। मैं अपने टीम मेंबर से कम ऑडियंस से ज्यादा पूछ रहा हूँ। पहले ऑडियंस टीम जो कुछ भी तीन ऑडियंस दिख रही है हमें, पहले वो ट्राई करें। बिल्कुल सही बात है। पर एक इसको आप थोड़ा सा इलैबोरेट करें। डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड स्किल्स। अगर वो मतलब एंट्रीज, अगर आपने कहा एंट्रीज कर रहा है तो वो उसमें मतलब उसको उसमें स्किल्स प्रोवाइड होगी तो उसमें है। और अगर कोई किसी चीज को मैनेज कर रहा है तो वो मैनेजर में अच्छा होगा। एंड देन सारी जितनी भी ड्यूटीज हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही है ना, मतलब जो जिसमें अच्छा है वो वैसा काम कर रहा है। तो यही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पॉइंट है। बधाई के बाद तो वही है क्लैपिंग। और चलिए अब अपनी नेक्स्ट एक स्टडी पे मूव ऑन करते हैं। तो सत्यम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसे समझाएं प्लीज। पहले ऑडियंस रीड कर ले इसे। बहुत लड़ाई चल रही है इस कंपनी में। तो लड़ाई तो बहुत चल रही है, बहुत अवसाद मचा हुआ है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैनेजमेंट और लेबर बिल्कुल वर्कर बिल्कुल भिड़ गए हैं आपस में। हिट हो गई चलिए अब इसका थोड़ा सा सत्यम जी एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसा कि आपने पढ़ा कि पिछले 2 साल से फिल्म इंडस्ट्रीज में कोई भी फंक्शन स्मूथली एंड सिस्टमैटिकली नहीं हो रहा है और रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय में बीटर मतलब डे बाय डे खराब होते जा रहा है। तो आफ्टर ए कंप्लीट एनालिसिस इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एम्प्लॉयज आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड मैनेजमेंट आर नॉट fulfilling the commitment and increment and promotion. Risk management principle is being ignored by the given case. मतलब कि यहाँ पे एम्प्लॉय भी अपना वर्क ठीक से नहीं कर रहे हैं और मैनेजमेंट ने जो प्रॉमिस किया था कंपनसेट करने का वो भी फुलफिल नहीं कर पाए। तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? कौन बोलना चाहेगा? मिस कोमल। Remuneration was violated here. कैसे 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 ठीक है, तो कैसे ऐसे हुआ है वायलेट कि पहली बात तो जो मैनेजर है वो फुलफिल नहीं कर रहा है। दिस उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट इज नॉट फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट ऑफ इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन। बस ऐसे ही। अगर मैं कहूँ गलत है तो कोई और है? कोई और इस ऑडिटोरियम में एक्सप्लेन करने के लिए इसे
जनता के बैठे हैं यहाँ पे, वो लोग भी कोशिश कर सकते हैं। टैक्स नहीं लगेगा कोई क्या करेगा? इधर से यही करेगा। आई थिंक इट्स इक्विटी। इक्विटी कैसे हो सकता है डॉन? इक्विटी कैसे हो सकता है? एक्सप्लेनेशन। लगता है इसका आंसर कोई नहीं दे पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। और क्लैपिंग थोड़ी और जोरदार होनी चाहिए क्योंकि इसमें टाइम सबसे ज्यादा लगा है। जो एम्प्लॉइज हैं और जो मैनेजर हैं वो अब एक दूसरे के प्रति अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, जो डिसिप्लिन ब्रेक हो रही है जिसकी वजह से। बिल्कुल सही है। पर इसमें मेरा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, ये आपसे पर्सनली नहीं है, जितने भी बैठे हैं सबसे है। अगर चॉकलेट बिल्कुल मिलेगी। अगर मान लीजिए इसमें कंपनी जो है ट्यूलिप इंडस्ट्री है वो अपने एम्प्लॉइज को पे अब इंक्रीमेंट और प्रमोशन दोनों दे दिया अगर, तो क्या प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन वायलेट होगा या नहीं होगा? और ध्यान से पढ़िएगा, आंसर बिल्कुल टॉप पे ही लिखा है, आंसर भी मैंने बता दिया है। तो अभी भी नहीं मिला क्या? Not. I'll not give the answer, but I'll probably just drop a hint. पिछले 2 साल में ऐसा देखा गया है कि ट्यूलिप इंडस्ट्रीज के अंदर जो माहौल है वो काफी अनहेल्दी हो गया है। 2 साल लगे हैं इसको डेवलप होने में, यानी कि डेफिनेटली अंदर से आक्रोश और गुस्सा 2 साल से डेवलप हो रहा है। I will not give any answer on the level of pure human psychology. प्योर ह्यूमन साइड से ही देना चाहिए क्योंकि आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी ये सिखाती है कि अगर मैं काम बहुत ही ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कर रही हूँ और 2 साल से अगर मेरे बॉस फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सत्यम मुझे रिकग्नाइज कर रहे होते, एक्नॉलेज और अप्रिशिएट कर रहे होते, चाहे फाइनेंशियली या फिर सबके सामने या फिर किसी भी बोनस के साथ, तो शायद मेरे अंदर इतना गुस्सा पैदा नहीं होता कि मैं इनडिसिप्लिन मोड में आ जाऊँ। शायद मैं शांत रहती और मैं डिसिप्लिन के साथ एंड विद अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती रहती, सिस्टमैटिकली एंड डिसिप्लिनली एज इट्स बीन। Yes, ma'am, it is exactly the correct answer of this for this explanation. Thank you everyone for It's time for reward to other purely. yes, thank you so much for मैंने भी आंसर दिया था तो मैम के लिए भी बनता है। दुख इस बात का है कि अब जैसे सत्यनिष्ठा से काम किया लेकिन अवार्ड नहीं दिए सत्यम जी को, ऐसे आक्रोश दिल में पैदा होता है। अरे नहीं, थैंक यू सो मच। एम्प्लॉय ने काम किया, अवार्ड मिल गया, बोनस मिल गया, तो ऐसे क्या होगा? गुस्सा पैदा नहीं होगा और आने वाले 2 साल में भी हम स्मूथली सिस्टमैटिकली काम करते रहेंगे। टाइम टू टाइम चॉकलेट मिलती रहनी चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, बोनस, अप्रेजल, बड़ा पेचेक, कोई वेकेशन, मॉरिशस, है ना, ये सब। डिसिप्लिन वायलेट नहीं होगा।